हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ाई थिला? प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थिला देखो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो कौन सरी थिला? केस 1। देखो ऑलरेडी केस 1 पूरा सरी थिला। देखो ऑलरेडी सरी थिला केस 1। सो टुडे वी डिस्कस केस 2। आज हमें केस 2 पढ़िबा। देखो केस 2 माने कोन? केस 2 होची देखो when both the charges are of different nature ओके। तो फर्स्ट से माने केस 1 कोन होतिला q1 q2 ग्रेटर देन 0 किंतु एठी कोन हबो q1 q2 लेस देन 0। ओके, जेहेतु एठी both the charges are of different nature तो फोर्स टा कोन हबो? फोर्स इज attractive in nature। फोर्स टा कोन हबो? attractive in nature। so here f12 vector and r12 vector are in same direction। देखो समझते here f12 vector and r12 vector are in same direction। okay, then do the diagram करो। suppose this q1 charge, suppose this q2 charge, एटी फोर्स कोन attractive फोर्स हबो माने जॉइन करो q1 पई फोर्स केते f12 vector, then q2 पई फोर्स केते f21 vector। okay, then r12 cap, this is r21 cap। what is r12 vector? displacement from charge q1 to q2 हम आपको जानी थी q1 this is q2 r12 vector से भैया r21 vector माने कोन? displacement from charge q2 to q1 ड्रॉ कर दियो। this is r21 vector। देखो this is r21 vector तो r12 कैपिटल डायरेक्शन कोडे हबो r12 वेक्टर जगह रे हबो सी साइड रे। देखो देन r21 कैपिटल डायरेक्शन कोडे हबो r1 वेक्टर का डायरेक्शन देखो r21 कैप। ओके, देखो डायग्राम q1 इज ए चार्ज, q2 इज ए चार्ज, देन q1 बाय फोर्स केते f12 वेक्टर, q2 बाय फोर्स केते f21 वेक्टर, देन r12 कैप माने कोन? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r12 वेक्टर। व्हाट इज r21 कैप? unit vector in the direction of r21 vector। then what is called r12 vector? displacement from charge q1 to q2। okay, then what is r21 vector? displacement from charge q2 to q1। okay, then according to Coulomb's law, Coulomb's law, कूलम्ब्स लॉ अनुसार एटी फोर्स ऑफ फार्मूला कोन हो? देखो f12 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा q1 q2 by r स्क्वायर। ओके, r12 वेक्टर देखो देन सॉरी r12 कैप। ओके, f12 वेक्टर इज इक्वल टू बीटा q1 q2 by r स्क्वायर r12 कैप। ओके, देन r12 कैप का फार्मूला पुट करो यूनिट वेक्टर रो। देन f12 vector is equal to beta q1 q2 by r square r12 vector by modulus of r12 vector। हम आगे पढ़ाई दिला देखि देबो, जो माने जानि ना वीडियो को देखि देबो। ओके, प्रीवियस वीडियो। देन we know r vector is equal to modulus of r12 vector is equal to modulus of r21 vector। हमें सब को हमें कोन r नहीं पारिबा त माने कोन r21 वेक्टर जगह रे हमें r पुट कर देबा। देन above equation becomes कोन हला above equation? देखो that is above equation becomes माने this equation f12 vector is equal to beta q1 q2 by r square r12 vector by that is r। okay, r vector कोई मारो। then
f12 factor is equal to beta q1 q2 by r square, sorry r square into r कौन r cube, beta q1 q2 by r cube into r12 factor. Give suppose equation number 1 दीजिए, suppose give equation number 1. Okay, then similarly देखो f21 factor माने कौन हबो beta q1 q2 by r cube r21 factor. इक्वेशन नंबर 2 दे दियो, देखो समझते भल से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. देन since r12 factor is equal to minus of r21 factor. Okay, देखो since r12 factor is equal to minus of r21 factor. Okay, then r21 जगह रे वैल्यू पुट कर दियो. ओके, r12 factor जगह रे वैल्यू पुट कर दियो. ओके, then put this using the value of r12 factor in equation number 1 we get 1 रे पुट कर दियो. पुट कला पे कोन ला देखो इक्वेशन 1 रे पुट करो, पुट कला पे देखो r12 factor रे पुट कर देबो और f12 factor is equal to beta q1 q2 by r cube. r12 factor वैल्यू केते minus of r21 factor. ओके, देन हमें कोन करथिले ए माइनस का आगो माइनस टा कोथि लिखिबा आगो लिखि देबा. तो लेखो देन f12 factor is equal to minus beta q1 q2 by r cube r21 factor. इक्वेशन नंबर 3 दे दियो. गिव इक्वेशन नंबर 3. एबे देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 2 बा 2 and 3 कंपेयर कर दियो. एटा कहां वैल्यू देखो एटा होची तमर f1 वेक्टर का वैल्यू बा पुट कर दियो. पुट करि पालो तमे बीटा q1 q2 by r cube r1 वेक्टर वैल्यू केते दैट इज f1 वेक्टर. पुट दिस बा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 कंपेयर करले पे कोन हबो दैट इज f12 factor is equal to minus of f21 factor. देखो सेम आगो केस रे कोन पाइथिले आगो केस रे पाइथिले देखो f12 factor is equal to minus of f1 factor. इट भी हमें समान सेम पाइले देखो. देन thus it can be concluded that whenever two charges are facing each other, thus it can be concluded that whenever two charges are facing each other, they experience equal and opposite forces. These two forces can be treated as a pair of what? A pair of action and reaction. Okay. एक्चुअली देखो पिला माने हमें ऑलरेडी दुईटा लॉ क्वेश्चन पढ़ी सारले. तो कोन देखो समस्त क्वेश्चन ऊपर फोकस करो. तो फर्स्ट देखो नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज कूलम्स लॉ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट. एग्जाम रे आसी पारे बोर्ड एग्जाम रे व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स स्केलर फॉर्म. but derive its scalar form. आसी बारे देखो व्हाट इज कूलम्स लॉ, derive its scalar form. then number 2
what is Coulomb's law? What is Coulomb's law? Derive its vector form. Derive its vector form. देखिए जो पिला माने very very important question. What is Coulomb's law? Derive its scalar form. Then what is Coulomb's law?